नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल आकाश ईटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हमारी स्टोरी टाइटल है लिटिल मरमेड। लिटिल यानी होते छोटा, मरमेड यानी होते जलपरी, छोटी जलपरी। चलो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लॉन्ग लॉन्ग एगो इन द डीप सी किंगडम देयर लिव्ड द सी किंग विथ हिज 5 मरमेड डॉटर्स। इसे सायरनेटा पढ़ते हैं या सिरनेटा भी पढ़ते हैं। वॉज द यंगेस्ट एंड द लवलीस्ट अमंग देम। शी हैड ए ब्यूटीफुल वॉइस एंड एवरीबॉडी फ्रॉम फार एंड वाइड came to hear her sing and praised her voice and her beauty. One day, while Serenata was swimming on the surface of the water and watching ships go by, she saw a younger man falling off his ship. She swam swiftly to save him from drowning and dragged him to the shore. Soon people found the man on the shore and Serenata swam away. This man was actually the prince of a kingdom. When he became conscious, the prince looked around for the girls who had saved him, but no one knew who she was. Serenata obtained thought of the young man and fell in love with the prince, but she was sad because could never be like all the other ladies. He knew they had 2 feet and she had a fish tail. In the deep sea, lived a witch with magical powers. One day, Cinderella went to beg her for human legs, to which said, "I need your beautiful voice. Only then I shall give you legs. But you must remember every time you set your feet on the ground, it will hurt every lady." Cinderella agreed. Uh, she did not mind the pain. All she wanted. ठीक है, चलो इसकी मीनिंग देखते हैं इसमें। डीप यानी तो गहरा, सी यानी समुंदर, किंगडम यानी तो साम्राज्य, लिव्ड यानी रहना, किंग यानी राजा, मरमेड यानी होते जलपरी, डॉक्टर्स यानी होते बेटियां, यंगेस्ट यानी होते जवान, ठीक है, ब्यूटीफुल यानी सुंदर, वॉइस यानी होता आवाज, एवरीबॉडी यानी होते सभी, वाइड यानी होता चौड़ा, सिंग यानी होता गाना, ठीक है, हियर यानी होता सुनना, ब्यूटी यानी सुंदर, स्विमिंग यानी होता तैरना, सरफेस यानी होता सतह, वाटर यानी पानी, वॉचिंग यानी होता देखना, शिप्स यानी होते जहाजे, यंग यानी होता जवान, शिप यानी जहाज, स्वम यानी होता तैरना, शोर यानी होता किनारा, सून यानी जल्दी, पीपल यानी लोग, फाउंड यानी होता पाना, एक्चुअली यानी होता वास्तव में, प्रिंस यानी होता राजकुमार, किंगडम यानी होता साम्राज्य, कॉन्शियस यानी होते सचेत, ठीक है, अराउंड यानी चारों ओर, गर्ल यानी होते लड़की, थॉट यानी सोचना,
मैन यानी आदमी, लव यानी होता है प्यार, ठीक है। बिकॉज यानी होता है क्योंकि, नेवर यानी कभी नहीं, लाइक यानी होता है पसंद, अदर यानी दूसरा, लेडीज यानी होता है औरत, टू यानी दो, फिट यानी होता है पाँव, फिश यानी होता है मछली, टेल यानी होता है पूंछ, डीप यानी गहरा, सी यानी समुंदर, विच यानी होता है चुड़ैल, ठीक है। मैजिकल यानी होता है जादुई, पावर्स यानी होते हैं शक्तियां, बैग यानी होता है निवेदन करना, ठीक है। नीड यानी होता है आवश्यकता, ब्यूटीफुल यानी सुंदर, रिमेम्बर्स यानी होता है याद करना, ठीक है। आगे देखते हैं। Was to be with the prince as soon as she got her two feet. Cinderella became dumb when she was leaving. The witch said, "If your prince marries anybody else, you shall dissolve in the sea's water. You can never become a mermaid again." With the witch's magic spell, Cinderella found herself lying on the beach, and the prince looking down at her. She asked, "Where are you from?" But she could not reply. The prince took her to his palace and looked after her. They became good friends and had a wonderful time together. Every step Cinderella took hurt, but she bore it all silently. She loved the prince, but the prince was in love with the beautiful maiden. मेडन यानी होता है कन्या, ठीक है, who had saved him. The prince did not realize it had been Cinderella, and she could not, ठीक है, इसका मतलब होता है could not tell him, obeying the wishes of his father. The prince went to meet the daughter of neighboring king. Enchanted by her beauty, the prince was convinced this was the same maiden who rescued him. He asked the princess to marry him. ठीक है। A grand wedding took place. Cinderella was heartbroken that night. Crying, she ran to the seashore. There she saw four mermaids. Why, they were her sisters. One of them handed her a knife and said, "Here, Cinderella, this is a magic knife. We give our long hair locks to the witch of the deep sea, and she gave his to us in return. Kill your prince and you shall turn into a mermaid again. Then you can come and live with us." Cinderella took the magic knife and went to the prince's room at night, but she loved him so much that she could not kill him. She knew that at dawn she would vanish into the sea, just as the witch of the deep sea and told her. Earlier she sat on the shore and wept
Silently, suddenly, from the sky came a pink cloud. It lifted her from the land into the sky. Where am I? Asked Cinderella, for now she could talk. The beautiful fairies replied, we are the air fairies. You are now one of us because you did a good deed for the person you love. Came with us. From then on, the little mermaid Cinderella lived in the sky with the fairies. ठीक है, फेरियस होते परियों। ठीक है, देखते हैं अब इसकी मीनिंग। प्रिंस यानी तो राजकुमार, सून यानी जल्दी। ठीक है, फिट यानी मैजिकल यानी जादू। वेडिंग यानी होते शादी। ठीक है, नाइफ यानी होते चाकू। रिटर्न यानी तो वापस। किल यानी मारना। ठीक है, सडनली यानी तो अचानक। स्काई यानी आसमान। पिंक यानी गुलाबी। क्लाउड यानी तो बादल। ठीक है, कैसी लगी छोटी सी स्टोरी? अगर थोड़ी भी पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।